Student, today we will discuss one more problem on projection of solid. So this problem is based on pentagonal prism. So I want to discuss a problem based on a prism. In my last two video I discussed with you a problem based on pyramid. So pyramid, as you know that a pyramid is having a apex, and but in the case of prism we don't have apex. We have two bases, same in the bottom and the top, but not in the case of pyramid has a base, but at the top there is apex, not the same base, top and above. So this is the main difference. You need to know this during exam time. Don't be confused. You firstly know about the prism and pyramid, and then read the question carefully and then go for that. So this is a problem based on a pentagonal prism. As you know that pentagonal is having five-sided figure, and the side of base is 30 mm. That is the side. This side is 30 mm. This is 30 mm, and height. This height is given. This height is 60 mm. This height is 60 mm, and this base is, that is our edge, is 30 mm. 30 mm, base 30 mm, and height is 60 mm. Rest on HP on one of its corners. So one of its corner means a corner is in the right side, in the true surface, base surface. So the corner must be in the right side with the longer edge. With the longer edge means corner, place corner, like if this is a side, this is a corner place, and this is longer side, not this side, it's longer side. So it's longer side, longer edge containing that corner. जो corner उसने contain किया है, जो longest side, inclined 45 degree to HP and 30 degree to the VP. So the same that long edge is inclined with HP 45 and 30 degree with the VP. So this is the true surface. These are the true surface. So which one is correct? That is the corner. You have to place a corner and then inclined the longer edge of along this corner, not the side. So the true surface that is or a base surface is made up of this, is based on this by this diagram. So now in the next slide so in the next slide, so this is a slide. Next slide, that is, you have to draw this like this. You have to draw like this. This corner is in the right side, and this longer edge, this is, I'm talking about that, this longer edge. So start with this true surface and draw this pentagon. You know how to draw this pentagonal, and then red lines are the projection lines. You have to draw the projection line with 2H pencil, so it must be light in nature. So move all the point. One thing I just want to tell you, that is, I write here D/4 because we have 2 point here, because this face, this top face and this bottom face overlap on each other. Because when you see it from the top, you will find that both the surface, upper and lower surface that you are seeing in the front view, overlap in the top view. Here in the top view overlap. So that's why these points come D and 4, because this 4 is here and D is above this,
this overlap on each other. That's why in the top view I'm writing 2, that is the 2 d comma 4. You can write do d comma 4 or d slash 4 by any manner. So this is the way to write down the naming on the of the overlapping surface. So then move all this projection line above, and one thing is clear: when you see this front view in the front side, you will find that the visible portion will be in dark lines, and that the lines or the edges, long edges, are not seen, will be make in a dotted line. So when you see it from here, we know that these point here we will get 2 point, that is a slash 1, b slash 2, a slash 1, b slash 2, c slash 3, d slash 4, and e slash 5. One thing is clear, that e slash 5 we will not see this in front view, because it is behind the pentagonal prism. But when you see it from here and the projection line moves from C to E, it overlaps, it coincides with this 2 point. The reason is when you draw this the projection line पास थ्रू द सेम पॉइंट. दैट्स वाई कि जो ये लाइन डार्क आई है, इसके पीछे एक डॉटेड लाइन है. जो डॉटेड लाइन हमने बनानी थी बिकॉज ऑफ ओवरलैपिंग, तो क्या हुआ, ये डार्क लाइन के पीछे छुप गई है वो डॉटेड लाइन. तो फ्रंट से ये भी डार्क आएगी. इन द फ्रंट साइड दिस इज़ इन अ डार्क, दिस इज़ डार्क line. So this is a dark line. So you will draw this, then you have to draw this all this front side of this prism, this pentagonal prism. Then next, according to the question, that incline the longer edge 45 degree to HP. So HP का एंगल VP से बनता है. So this theta is 45 degree is inclined, and the angle is given to this longer edge. Then how to draw this? So take point anywhere on the XY line. Then take this length, then take this length, this take this true length, that is the height of this. This 60 is the height of this. Take this and draw this light line and cut 60 here, and then take this here to here, the base, and draw light line and cut here. Then dark this line, this line, and join all these with the help of drafter as well as roller scale. You can add this, you can add this, join this, and draw the same face at angle 45 degree. This is a longer side that you incline 45 degree according to the question with HP. So then draw all these projection line below, as we have done in our last question. So draw all these projection line accordingly from 4, from to this 1 dash, 2 dash, D dash, C dash, E dash. So draw all these projection line below this, and create and also transfer all these projection line from this side and this side. Then join all these. Then the intersection of the lines give you point 1, A1, 2, 1, 3, 1, 4, 1, 5, 1. सो जो ये बेस है, इसे हमने 1, 2, 3 से नेमिंग की है, और जैसे यहाँ नीचे 1, 2, 3 से की है, ऊपर ABCD से. सो ये हो गया 1, 2, 3 वाला बेस, और ये हो गया C1, D1, E1, A1, ये सब इसके बेसिस आ गए.
So from this, when you see it from the top, you will find one thing, that when you see it from the top, you will see this, you can see this base above this base, but this base is in the downward side of this figure. When you see it from the top, here I have no space to draw this top line, so it is from the top, and you can't see this bottom, this line, because this is under this base, so you can't see this base, some baseline below this, and in the top you all you can see the upper base. So this upper base, that is A1, E1, D1, B1, C1, all you can see, and these all are dark lines and are outer part also. So here you can't see, but the outer line, according to the rule, the outer line must be dark, and the line, and अगर वो लाइन अगर दिख नहीं रही है तो बाहर, अगर वो फिगर के आउटर साइड पे आ रही है तो आपको डार्क बनाना पड़ेगा. अगर वो लाइन दिख नहीं रही है और अंदर आ रही है, देन यू कैन ड्रॉ विद द डॉटेड लाइन एज आई ड्रॉ दिस, बिकॉज ये बेस आपको दिख नहीं रहा था, पर आपको इसको डार्क बनाना पड़ा, बिकॉज ये फिगर के बाहर की तरफ की लाइनें हैं, और ये लाइंस, जो ये दो लाइंस हैं, ये आपने डॉटेड बनाई, बिकॉज ये अंदर बेस के अंदर, ये फिगर के अंदर आ रही है, और अंदर आ रही हैं, और इसे हम लोग डॉटेड बना सकते हैं. और एक चीज़ और मैं आपको रूल बताना चाहता हूँ कि दो डॉटेड लाइन जब मिलती हैं तो तीसरी डॉटेड लाइन बनती है उससे. वी कैन मतलब अगर दो डॉटेड लाइन मिलें तो तीसरी डॉटेड लाइन मस्ट है, वहाँ से निकलेगी. और अगर दो डार्क लाइन मिल रही हैं, इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो जो थर्ड लाइन होगी ऑलवेज़ एंड ऑलवेज़ बी डार्क. सो ये सब रूल है. और एक चीज़ और रूल और भी है कि एक डॉटेड लाइन दूसरी डॉटेड लाइन को कभी नहीं काटेगी, और एक डार्क लाइन दूसरी डार्क लाइन को कभी नहीं क्रॉस इंटरसेक्ट करेंगी. ऐसा हो सकता है डॉटेड लाइन कैन इंटरसेक्ट द डार्क लाइन और द रिवर्स केस, और वाइस एंड वर्सा. सो दीज आर सम रूल you must have the knowledge of that rule, बिकॉज ये आपको अप्लाई करना पड़ सकता है कभी भी क्वेश्चंस में. सो आउटर मैंने डार्क बना दिया, और जो लाइंस नहीं दिख रही थी उसको मैंने बना दिया. और एक चीज़ और, जैसे मैंने कहा, दो डॉटेड लाइन मिलके डार्क एक इंटरसेक्ट जब होती हैं तो एक डार्क लाइन बनती है, तो ये डॉटेड लाइन बन गई, बिकॉज ये दो डॉटेड लाइन आई और ये तीसरी डॉटेड लाइन इससे हमें मिल गई. ऐसे करके ये डॉटेड आएगी थर्ड लाइन, जो इंटरसेक्शन से निकलेगी. और इसी के इन बिटवीन दिस हमारे पास एक्सिस भी है. वी हैव ऑल्सो एन एक्सिस. सो एक्सिस और वो जो लास्ट जो आपका लॉन्गर एज है वो ओवरलैप हो गया, इस वजह से वो पता नहीं चल रहा उसका एक्सिस का. दिस इज़ एक्सिस. सो अब नेक्स्ट में क्या है, हम इसे ऑक्सिलरी मेथड से कर रहे हैं. ऑक्सिलरी मेथड मैंने आपको बताया नहीं है. आई इन ऑल माई क्वेश्चन आई डिस्कस्ड विद यू नॉर्मल मेथड. नॉर्मल मेथड में क्या होता है, हमें इसके बाद हमें इस, जैसे ये लॉन्गर साइड है, ये लॉन्गर साइड जो है, हाँ जी, ये लॉन्गर साइड है, इसे जैसे हमने ये लाइन है डी डैश एंड 4 डैश. डी डैश एंड 4 डैश क्या है, ये डी डैश एंड 4 डैश को आपने कैसे, पहले जो नॉर्मल मेथड में क्या करते थे हम यहाँ से एक लाइन जैसे है, हमें डी इंक्लाइन कर दी हमने, 30 डिग्री एंगल बना दिया, उस 30 डिग्री पे डी डैश और 4 डैश मार्क कर लेते थे. डी डैश और 4 डैश मार्क कर दी, फिर उसके साथ इसकी प्रोजेक्शन लाइन्स हम लोग ड्रॉ करके, सारे के सारे पॉइंट मार्क करके हम लोग एक फिगर ड्रॉ करते थे, और सेम फिगर को हम लोग इसको रोटेट कर देते थे with the given angle with VP. Then all the projection line moves above, and this intersection and all these line intersection create a front view in the sixth figure of this question. But in auxiliary plane method आपको उस फिगर, यहाँ नीचे फिगर बनाने की ज़रूरत नहीं है. आपको सिंपली क्या करना है,
जैसे ये लाइन है 4 डैश टू D डैश, आपको इस लाइन को एक लाइट लाइन ड्रॉ करके इसी के पैरेलल आपको इसी के सामने आपको एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है। उस पर आपको एक मार्किंग करनी है, पॉइंट लगा के आपको एक 30 डिग्री जो एंगल VP के साथ दिया है उसे ड्रॉ कर लेना है। और जैसे आपने 30 डिग्री एंगल ड्रॉ किया, आपको इसमें बीटा एंगल निकालना है। बीटा एंगल इसलिए निकालना है बिकॉज ये जो हमने जिस लाइन को हम लोग इसको इंक्लाइन कर रहे हैं, दिस लाइन इज़ अ शॉर्टर लाइन बट एक्चुअली इट इज़ अ लॉन्गर लाइन बिकॉज ऑफ इंक्लिनेशन दिस लाइन गेट रिड्यूस। सो आपको क्या करना है, सबसे पहले एंगल थीटा जो है 30 डिग्री जो एंगल है लॉन्गर साइड को दिया है, लॉन्गर एज, द 30 डिग्री एंगल इज़ गिवन टू द लॉन्गर एज। सो आपने इस लॉन्गर एज को मार्क करना है। सबसे पहले आपने यहाँ एक पॉइंट लिया, एक लाइन ड्रॉ की, रेड लाइन जो ड्रॉ की है ये लिया है और एक लाइट लाइन ड्रॉ कर दी। आपने लॉन्गर एज का जो है उसको लिया और यहाँ पर कट किया। देन ड्रॉ द पैरेलल लाइन फ्रॉम दैट पॉइंट, दिस लॉन्गर साइड को कंपास से कट करने के बाद then take this D dash and 4 dash, the reduced length of this from this figure, and put the compass here and cut this parallel line as you draw from this from this true length of this from this point, and then join this with the from this point to this point. Then write here X dash and Y dash, and then transfer all these line here, transfer all these projection line on this XY line. So now this XY line is a reference line. And how to draw this? Firstly, draw this 30 degree angle with this parallel line. Then you have to draw a beta angle. For that, mark this true length first on this 30 degree. Then draw a parallel line here, and then take this D dash 4 dash distance and put the compass here and cut this line and join this line. So this line is X Y dash and X dash. So इस तरीके से आपको बीटा एंगल निकालना है। देन एक्स वाई जब आपको मिल गया, उसके बाद ऑल दिस प्रोजेक्शन लाइन आपको सीधा इस पर डाल देनी है। और उसके बाद आपको पॉइंट कैसे लगाने हैं, जैसे 4 जो है 4 डैश जो पॉइंट है, जो 4 डैश पॉइंट है वो पॉइंट एक्सिस पर है मतलब एक्स वाई पर है, तो आपने यहाँ पर 4 डैश को एक्सिस पे लगा दिया। देन दिस डिस्टेंस इज़ D डैश, ये एक्स वाई से कितना ऊपर है आपको कंपास से ये डिस्टेंस देखना है। और D डैश की जो लाइन है, लाइक दिस लाइन D डैश की ये लाइन है, आपको कंपास से क्या करना है, सॉरी एग्जैक्टली यहाँ से नहीं आया, ये यहाँ से जा रहा है D डैश। आपको एक्सिस पर यहाँ पॉइंट रखना है और यहाँ पर इस पॉइंट को मार्क करना है। डिस्टेंस कौन सा होगा, ये डिस्टेंस होगा, फ्रॉम एक्स वाई डिस्टेंस होगा। और D जो प्रोजेक्शन लाइन है एक्स वाई से आपने ये डिस्टेंस मार्क करना है। उसी तरीके से जैसे ये डिस्टेंस है आपका 2 डैश 1 डैश, ये कितना एक्स वाई से ऊपर है ये देख लेना है आपने। और फिर 2 डैश और 1 डैश वाली लाइन को देखना है और एक्स वाई लाइन से आपको ड्रॉ कर देना है। लाइक दिस 2 वाली ये 2 लाइन है, ये साइड से जा रही है। और दिस here put the compass here to cut this distance from this distance, this, and then 1 dash also this, and put all these intersection point, take all this distance from here above this figure, and mark the point on the projection line, and you will get all the point on the projection line. Then join the projection line. Then in here you will you have to see the front view from this side of this figure, and you will get front view here.
और ये कैसे होगा, जब आप यहाँ से देखेंगे आपको ये जो बेस है, जो जैसे 1 2 3 4 5 है, ये आपको ऑलमोस्ट पूरा दिखेगा बिकॉज़ आप बैक से देख रहे हैं ऐसे। पर ये जो फ्रंट, ये जो है साइड, ये आपको नहीं दिखेगा। तो इसीलिए जैसे आपने यहाँ से ड्रॉ किया, देखिए 1 2 3 4 5 ये सब डार्क हैं, और ये जो साइड है ये डार्क नहीं है, डॉटेड है, बिकॉज़ ये हाइड हो गया, इस बेस के सामने हाइड हो गया। तो आपने क्या करना है, जैसे रूल जो है, रूल में क्या है कि आउटर लाइंस जितनी भी हैं वो सब विजिबल होनी चाहिए, वो दिख रही हैं या नहीं दिख रही है। अकॉर्डिंग टू द रूल एवरी लाइन, आउटर लाइन मस्ट बी अ डार्क लाइन। और दूसरा ये है कि जो डॉटेड है इनसाइड द फिगर, लाइक दिस एंड दिस इनसाइड द फिगर, तो वो आपको डॉटेड बनाना है, उसे डॉटेड बनाना है आपको। और दो डॉटेड लाइन मिलकर तीसरी डॉटेड लाइन बनाती है, और दो डार्क लाइन मिलकर तीसरी डार्क लाइन बनाती है। ये रूल है, ये आप कहीं फॉलो कर सकते हैं इनसाइड दिस फिगर। सो देखिए यहाँ सारी साइड्स जो हैं डार्क हैं, और जो डॉटेड लाइन है, जैसे ये दो डॉटेड लाइन मिलके एक डॉटेड लाइन बना रही है, इसी तरीके से आपको देखना है। तो जैसे ये फेस नहीं दिखा, मैंने कहा फ्रंट वाला उसमें, बट ये फिगर के साइड में आ रही है, लाइंस आउटर साइड पे आ रही हैं, और ये अंदर साइड आ रही हैं। जो अंदर वाली है उसे डॉटेड बनाया, और जो बाहर की तरफ हैं उसे डार्क बनाया। तो इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन करना है। ये प्रॉब्लम, ये वीडियो इसलिए बनाया है मैंने, ये वीडियो इसीलिए बनाया गया है, क्वेश्चन ये आपसे यूट्यूब से लिया गया है क्वेश्चन। तो इससे इसीलिए बनाया गया है कि एक लास्ट वीडियोस में मैंने पैरामिड में प्रॉब्लम बनाया है, ये प्रॉब्लम था प्रिज्म पर। तो आपको पता चल गया पैरामिड में एपेक्स वर्टेक्स रहता है, और प्रिज्म में बेस रहता है, नीचे भी और ऊपर भी। और नेमिंग बेस की नीचे भी होती है और ऊपर भी होती है, और वो समटाइम इन द टॉप व्यू ओवरलैप हो जाती है। उससे कंफ्यूज नहीं होना है, डबल नेमिंग नहीं सोचना है उसे। और इस तरीके से आप ये, और दूसरा रीज़न ये था इस वीडियो को बनाने का कि ये नॉर्मल मेथड नहीं, ऑक्सिलरी मेथड से है। और जब भी ऑक्सिलरी मेथड आएगा, कि ऑक्सिलरी, नॉर्मली आप ही डिसाइड करेंगे कि ऑक्सिलरी से करना है या नॉर्मल मेथड से करना है, दिस इज़ योर चॉइस। बट इन योर सिलेबस somewhere written is auxiliary method, so I just want to tell how this auxiliary method work, and with this how you will draw this front view as well as top view. So this is the way, it is a shorter way to create this front and side view, because जो normal method में 6 figures बनती हैं, यहाँ में 5 में आप बना देते हो। और this is an auxiliary plane method in projection of solid, and problem is pentagonal prism. So this is all about this question. So this question is very important because it is of prism as well as it is based on auxiliary method. So one more problem I will make on this projection of solid, and finish this this topic projection of a solid, and will move to the another topic called development. So this is all about this video. We'll meet in the next video. Thank you.